Hello dear students, welcome you all for this video lecture. Now in this video lecture we have discussed the another part of the immunity. In the previous video we have discussed about the what is immunity and what are the types of immunity. There are generally two types of immunity is there. One is the non-specific immunity and the specific immunity. The non-specific immunity is otherwise known as innate immunity, and that is we have already discussed in our previous video class. Now in this video class we have discussed about the second type of immunity, that is the specific immunity or the acquired immunity. I have already told you in your last class that what is acquired immunity. It is nothing but the power that the body will be gained throughout their life. ये जो थ्रू आउट द लाइफ रे बॉडीटा जोटा कि हमर गेन करूची जो पावर टाको सेटा को हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली कहउथले. एई जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूर्ण दि भाग रे व्यक्त हेतला पहिले म तुमको कहितले एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. ए सब विषय रे आज हमें डिस्कशन करबा एठी. तो जनरली द स्पेसिफिक इम्यूनिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी? बिकॉज़ इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी बिकॉज़ इट कैन specifically for the specific pathogen it will be developed in our body. That means the antibody is developed a particular bacteria, the particular antibody will be developed for a particular virus, a particular antibody will be developed, so that due to it will be identify a particular organism, so that it is otherwise known as specific immunity. And the specific immunity is again subdivided into two types, that is the antibody medicated immunity and the cell medicated immunity. Now in this video we have discussed about the what is acquired immunity or it is otherwise known as specific immunity. तो देखो पहले कौन कहला, what is the definition? I can write the first the definition कौन कहला, the resistance of an individual to acquire during the life. जे कौन से गोटे इंडिविजुअल पाखरे in an individual, the resistance of an individual, मन कर let's think about me, मो पाखरे जो कैपेसिटी टा रहिला बा मो बॉडी रो जो रेजिस्टेंस टा रहिला, the resistance of an individual, गोटे इंडिविजुअल माने each and every individual पाखरे जो रेजिस्टेंस पावर रहिला to fight against the pathogen, सेही जो पावर टा that will be acquired by our body throughout their life. आमर जो लाइफ समय सीमा भितर लाइक मु तुमको गोटे एग्जांपल मध्ये कहितली चिकन पॉक्स. मु तुमको कहितली गोटे थर वन चिकन पॉक्स हेला माने नेक्स्ट टाइम हमको हुए नाही, कारण एई जो चिकन पॉक्स जो पैथोजेन ता हम देह भितर को आसीथिला ता एग्नेस्ट रे हम बॉडी रे कोन हिची एंटीबॉडी डेवलप हेई सारिची. तो नेक्स्ट टाइम से जतो हम अटैक करूची सेही समय रे सेही जो पार्टिकुलरली सेही जो चिकन पॉक्स रो पैथोजेन ता हम देह रे डेवलप करि परिबनी, जा फल रे हमको आ से डिजीज ता अगेन रिपीट हे परिबो नाही. तो एई जो प्रोसेस ता हम थ्रू आउट आवर लाइफ में हम गेन करले, तो एई जो प्रकार हमर इम्यूनिटी ता हम कोन बोली कहते एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली हम कहते. देखो कोन कहला, व्हाट इज द डेफिनेशन? द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ. एई जो गोटे इंडिविजुअल पाखरे जो एक्वायर्ड करूची बा गेन करूची थ्रू आउट द लाइफ पीरियड रे, सेटा को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली हम कहले. नेक्स्ट इट इज ऑफ टू टाइप्स. जनरली एटा दुई प्रकार कोन आसला, एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी द्वारा जोटा हमको आसी, एंड नेक्स्ट वन इज द सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी. अगेन द सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी पाखरे हम देखिबा सिटे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. तो एई तो फर्स्ट हम डिस्कशन करतबा व्हाट इज एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी. व्हाट इज एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी देखो पूरा डिटेल्स में लिखि से कोन कहला, एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी it is occur एटा हुए due to the presence of antibody produced from the B lymphocytes. दुईटा जिंस देखो एटा को एटा मेन डिफरेंस कोन, एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी रे सेट रहउची जनरली इट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द B lymphocyte, and here in the cell medicated immunity it will be produced from the T lymphocyte. So sir, what is B lymphocyte and what is T lymphocyte? It will be discussed in our blood. In our 11th classes I can already tell you, in our blood there is a two type of cells are there, that is that B lymphocyte and T lymphocytes is there, and they will be produced a different type of antibody to fight against the disease causing pathogens. Okay, तो देखो पहले कौन कहला, एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी कौन कहला, एटा हमर गोटे इम्यूनिटी बा इम्यूनो पावर जोटा कि हमर देह रे थिबा ब्लड रे हमर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होची कोट प्रोड्यूस होची फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स.
नेक्स्ट आसला एंटीबॉडी आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन एटा गोटे हला जो एंटीबॉडी बोली जोडा हम कहते एटा गोटे हला वन टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन व्हिच कैन बी कंबाइंड विथ द स्पेसिफिक एंटीजन दैट मींस द पैथोजन और द एंटीजन जोडा बाहर आसी ता संगे मिसी कि से कोन करছে व्हिच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन जोडा कोन करছে तार प्रोडक्शन टा को रैपिड कराउची तो देखो कोन कहला antibody are the specialized protein immunoglobulins also it is otherwise known as देखो it is otherwise it is माने का रिप्रेजेंट करছে the antibody is otherwise known as immunoglobulins एटा को हम कोन बोली कहते एंटीबॉडी टा को immunoglobulins बोली मध्ये कहबा ए जो एंटीबॉडी जाको एंटीजन रो कंबाइंड रे मिसी कि से माने कोन करछन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन से मानकर प्रोडक्शन एंटीबॉडी मानकर प्रोडक्शन टा से माने अधिया करंती बा रैपिड करंती एटा को हम कोन बोली कहते एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी बोली कहते इट इज अदरवाइज नोन एज immunoglobulins नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन occurs and by the process the effect of the antigen is diminished by the antibody एई जो प्रोसेस रे देखो कोन हला एंटीजन आ एंटीबॉडी जाको फाइट करले बा रिएक्शन हला द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन occur एंटीजन एंटीबॉडी रो रिएक्शन हला जहा फल रे कोन करचे द प्रोसेस द इफेक्ट ऑफ एंटीजन रो जो इफेक्ट को एंटीबॉडी डिमिनिश नष्ट कर देला एवं से निजे प्रोड्यूस कला तो एई जो प्रोसेस हमर जो पैथोजन ता हम देह भीतर आसी थाए एई जो पैथोजेन्स ता हम देह भीतर आसी से जो पैथोजन को हम देह रे थिबा एंटीबॉडी ला त हम टोटली किल कर देछि नेक्स्ट आसला हमर सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी व्हाट इज सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी और इट occurs due to the presence of T lymphocyte तो B lymphocyte द्वारा जोड़ा प्रोड्यूस होची सेटा होची हमरा एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी दैट मींस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टली टेक्स प्लेस but it is the one type of immunity that will be produced that is produced in our cell by the T lymphocyte due to the presence of T lymphocyte in our WBC okay there are different type of T lymphocytes in our body in this cell there are different type of generally four type of am the four बोली कोइ परिवानी specific काई कहबा तो there are different type of T lymphocytes are exhibits that are functioning for the following type ए जो different types रो अछि T lymphocyte जाको से जो T lymphocyte जाको विभिन्न types रो अछि देखो कोन कहला the first one is the type cytotoxic T cell one मु लेखु छी देखो भल से देखो cytotoxic T cell or it is otherwise known as killer T cell हला एटा गुडा हमर जो T lymphocyte different types रहला तार फर्स्ट टाइप हला हमर cytotoxic T cell or killer T cell बस एटा को हमें killer T cell बोली कहबा the next one is the present which is known as helper T cell next one is the second one that is the helper T cell the third one is the suppressed T cell the third one is the कोन कहला suppressed T cell मु कहि देबी कोटा कोन काम करंते and the last one is the memory T cell the fourth one is the memory T cell so these are the different type of T lymphocyte which will be present in our cell to fight against the different type of disease causing organisms तो देखो पहले ये कौन गला जो हमर जो T lymphocyte रहला चारि प्रकार गोट रहला cytotoxic T cell killer T cell helper T cell suppressed T cell and memory T cell तो फर्स्ट देखिए हमरो व्हाट इज डन बाय द cytotoxic T cell or the killer T cell the cytotoxic T cell or the killer T cell can directly invade ये कौन करछि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल बा किलर टी सेल कौन करे जनरली इट कैन डायरेक्टली इन्वेड द डिजीज कॉजिंग पैथोजेन बाय किलिंग इटसेल्फ सीए मध्य मरि जिवो एवं ता सहित से किछि डिजीज कॉजिंग पैथोजेन तो देखि बाहर आछन्ति कारण आमर तो जनरली आम देहरे जो प्रकार एंटीबॉडी प्रोड्यूस होछि बाहर आसुवा से एंटीजन माननकु बा पैथोजेन माननकु से इजीली आइडेंटिफाई कर दिए कारण से जो पैथोजेन्स माननक देहर ऊपर सर्किल रे जनरली गोटे कार्बोहाइड्रेट लेयर थाए से जो कार्बोहाइड्रेट लेयर टा को आम देहरे थिबा एंटीबॉडी माने इजीली आइडेंटिफाई कर दियंती तो तांको एग्नेस्ट रे माने कोन करंती एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी ताको किल कर दियंती तो किलर टी सेल रो काम कोन और द साइटोटॉक्सिक टी सेल कैन इन्वेड द डिजीज कॉजिंग पैथोजेन बाय इन्वेडिंग इटसेल्फ से निजो निजे मारी मध्य से कोन करछि पैथोजेन टा किल कर दियोते फर्स्ट असला हमर किलर टी सेल जेहेतु सेटा किल कर दिए मारी दिए सेति पय बोली नाटा कोन हिछि साइटोटॉक्सिक बाय प्रोड्यूसिंग सम टॉक्सिक सब्सटेंस सो दैट इट इज अदरवाइज नोन एज किलर टी सेल नेक्स्ट वन असला द हेल्पर टी सेल हेल्पर आमे जनरली कोन कहते हेल्पर माने जणको सहाय्य करूछि तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल इट कैन हेल्पफुल
फॉर स्टिमुलेटिंग द बी लिम्फोसाइट ये कौन प्रोड्यूस करछि हमरो बी लिम्फोसाइट को ये डायरेक्टली न किल करी ये कौन करछि इनडायरेक्टली बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करछि बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करछि दैट मींस एक्टिवेट करछि जा फल रे ई जो बी लिम्फोसाइट मध्ये कौन करिवो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिवो सही एंटीबॉडी टा पैथोजेन टा किल करिवो तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल द हेल्पर टी सेल कैन स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट ये कौन करछि बी लिम्फोसाइट रो प्रोडक्शन टा को स्टिमुलेट एक्टिवेट अधिक करूछि जा फल रे कौन करछि दे कैन द बी लिम्फोसाइट कैन प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इन द ह्यूमन बॉडी एंड दे कैन किल द पैथोजेन दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड तो से निजे डायरेक्टली किल न कोन इनडायरेक्टली किल कला नेक्स्ट वन इज द सप्रेस टी सेल सर एटा किछ लिखि नांती सिंपल मन रख सप्रेस माने कोन रे पिले देखो जनरली गोटे एग्जांपल मु दोची गोटे जिंसटा का हमें जीवा पूर्व ताको हमें डाउन कर दबा गुड एग्जांपल लेट टेक वन एग्जांपल फॉर एग्जांपल पर्पस let a candidate will give an exam and she is or he is mentally not prepared for the exam and someone tell him or tell her to you have failed because you have not prepared that means he is not attending the exam but mentally he is failure that means the माने he से कोन कला जेतो से लोकटा कहि देला जे तू फेल ही जीवो से मेंटली रेडी हे गेला माने से सप्रेस हे गेला डाउन हे गेला हो एग्जाम देख मु कोन करबी माने से कोन हलानी जाई से जो एग्जाम पाई गलानी तो लाइक दैट एटा गोटे एग्जांपल मु देली सेही भलिया हमर जो पैथोजेंस माने द पैथोजेन दैट विल बी एंटर इन आवर बॉडी द सप्रेस्ड टी सेल मिक्स विथ देम तांका संगे मिसि जयंती and they will be suppress the pathogen so that the pathogen will not be produced rapidly in our body by the to killing the pathogen तो ये मध्ये कोन कला the suppressed T cell suppress the pathogens ये कोन करछ हमर pathogens मानो को suppress करिवारे सहाय्य करछ the last one is the memory T cell what is the memory T cell memory माने कोन मन रखुचे तो the memory T cell can memorize that कोन सारी memorize करछ like if any virus or bacteria previously attacked to our body our body को previously से attack करिছে and by this particular antibody by this particular pathogen our body can fight against them and they can cure the human also cure from this type of disease that means they will be fight the antibody can fight against the pathogen and that will be remembered by the or the memorized by the memory T cell and when that particular bacteria or the virus or the pathogen will be again attacked to the same person body they will be memorize it and they will be invade them by memorizing how they will be invade to that particular pathogen एमाने कोन करे जदि गोटे डिजीज हमको ऑलरेडी हेई थिला एवं आमे तार देहरु क्योर हिचे तो ता एग्नेस्ट एंटीबॉडी हम देहर प्रोड्यूस हेई सारिछि तो एई जो मेमोराइज टी सेल कोन करिए मेमोरी टी सेल एई जाको मेमोराइज कर रखिथिबे कि भलिया एमाने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करथिले एवं कि भलिया से पैथोजेन को किल करथिले नेक्स्ट अगेन जेतो से पैथोजेन ता हम देहर एंट्री होबो एमाने सेटा को मेमोराइज करिकि सेटा को जो भलिया किल करथिले से एग्नेस्ट एमाने किल करिवे तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मेमोरी टी सेल तो एई प्रकार एमाने कोन करंती हम देहर इम्यूनिटी फॉर द स्पेसिफिक एंटीबॉडी बा स्पेसिफिक पैथोजेन पाई बोली माने स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करंती सेति पाई बोली एई प्रकार इम्यूनिटी को हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली कहछे नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी दिस इज द सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी कोन एटा सिंपली हमें देखि दबा ओके ओके तो देखो एबे कोन आसला हमरा आसला जो सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी थिला सेटा हम ऑलरेडी तुमको कहिछि एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी सर व्हाट इज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी इट इज जनरली हमरा डिफरेंस पतारे कोन कहला व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी बाय व्हिच द बॉडी आवर ओन बॉडी विल बी प्रोड्यूस द एंटीबॉडी आमर निजर बॉडी रो जो सेल जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करले ताको हमें एक्टिव इम्यूनिटी बोली कहबा व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी सर व्हाट इज पैसिव इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी बाय व्हिच इट विल बी इंजेक्टेड इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म दैट विल बी प्रोड्यूस माने एटा को हम देह इंजेक्ट करा हबो बाय इंजेक्शन करा हबो बाय इंजेक्शन देके हम माने इंजेक्ट करा हबो हम देह भितरे किमिति माने एई जो प्रकार एंटीबॉडी टा किछि गुटे हॉर्स बा मंकी एमानक देहरे ऑलरेडी सेरा प्रोड्यूस हेछि सेटा आनि कि जदि हम देहरे देले सेटा कोते हम पैसिव इम्यूनिटी बोली कहते माने जोटा कि हमर बॉडी तयारी करनी सेई प्रकार इम्यूनिटी को दैट इज रेडीमेड इम्यूनिटी बोली जोटा हम मध्य
कहीपर रेडीमेड इम्यूनिटी मुझे देख रेडीमेड इम्यूनिटी दैट मीन्स दैट इम्यूनिटी और द एंटीबॉडी व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अदर organisms and that will be injected into the human body. This type of immunity is known as passive immunity. But what is active immunity? It is the type of immunity by which our own body cell, our nijor body cell kon kurchi eita produce kurchi. Again the active immunity is again subdivided into two types, that is the natural immunity and artificial immunity. Like the passive immunity also divided into two parts, that is natural immunity and artificial immunity. So देखो आमे देखियो active immunity रो कोन आसला natural immunity. It is the type of immunity by which the body cell can produce, आम देहर जो body cell ता हमर produce करूचे by the past experience or the past infection. माने पूर्वरु जो infection हेछि जोटा मु तुम बारंबार कहूँ measles बा चिकन पॉक्स जोटा कि ऑलरेडी हमको हे सारी सी द पास्ट एक्सपीरियंस रे अगेंस्ट एंटीबॉडी हम देहर प्रोड्यूस हे चाची. व्हेन अगेन दैट पैथोजन विल बी एंटर इन आवर बॉडी दे विल नॉट कॉज disease to the organism. तो एटा गला हमर नेचुरल बाय द चिकन पॉक्स. आर्टिफिशियल कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन. तो देखो बिले जनरली हमर मनकर बीसीजी वैक्सीन नबा. तो ये जो बीसीजी वैक्सीन रो हमर जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर जो बैक्टीरिया टा बा भाइरस टा हमर एटा इंजेक्शन रे भर्ती रही छि. भाबो एई जो बैक्टीरिया बा भाइरस टा डेड टा ऑल मन डेड बैक्टीरिया टा. तो एटा हमर इंजेक्शन टा এই যে ইনজেকশন রে আমি কোন করিবা ইনজেক্ট করা হবো. তো এই যে এগনেস্ট রে যেতলে কি হিউম্যান দেহরে ইনজেক্ট করা হলা এই যে ইনজেকশন রে তা ফলে কোন হলা আ এগনেস্ট রে এই যে ডেড ব্যাকটেরিয়া এগনেস্ট বা ডেড ভাইরাস এগনেস্ট রে আমার দেহরে অ্যান্টিবডিটা প্রোডিউস হই গলা. তো व्हेन যেতলে কি এটা আমার দেহরে অ্যান্টিবডি প্রোডিউস হই আছে অলরেডি যেতলে কি সেই যে প্যাথোজেনটা আমাকে আটাক করিব সেই ডিজিজটা আমার দেহরে हुए नहीं माने डिजीज करे नहीं कारण ऑलरेडी आम देहरे ता अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होई अछि. सर एटा केमिति जानिबे माने डेड सेल ता पैथोजेनटा डेड हे गछन आम देहरे. तो मु तुमको ऑलरेडी कहि सालेनी एई जो जनरली जो पैथोजेन्स मानको देहरे ऊपर कोन अछि गोट लेयर अछि जोटा कार्बोहाइड्रेट लेयर ता सेई जो लेयर ता को आमे इजीली आम देहरे थिबा एंटीबॉडी जाको ताको आइडेंटिफाई कर दियंती. तो एई प्रकार ता हला हमर आर्टिफिशियल बाय द वैक्सीनाइजेशन BCG like asla different type of vaccination like BCG MMR oral polio तो generally एठी हमर लिविंग एठी मु कहली डेड एनिमल्स माने जो वैक्सीनेशन रे ओरल वैक्सीनेशन बा ओरल पोलियो रे जोटा हमर कोन थथि लिविंग बैक्टीरिया बा भाइरस जाक जनरली थुआ. तापर नेक्स्ट आसला हमर पैसिव इम्यूनिटी. तो एटा कोन ऑलरेडी जनक देह रे प्रोड्यूस हेछि सेटा को हम देह रे आनी की इंजेक्ट करा होछि. इट इज आल्सो टू टाइप्स दैट इज द natural and artificial. तो एठी देखो पिले एटा दीटा मन रखो IgG and IgA. Sir, what is the IgG and IgA? These are the different type of immunity or the antibody that generally the IgG देखिथियो when a baby will be birth generally the mother secrete that first milk will be feeding by that baby and that milk contain the IgA. That means that immunity will be produced by the mother body देहर सीटा प्रोड्यूस इज मदर मिल्क रो आसला बेबी पाकू. तो इटा हला पैसिव इम्यूनिटी बुझ पाला. सिमिलर लाइक दिस द IgG also one type of immunoglobulins that will be enter into the fetus body at the time when they will be placed in the mother womb or the by through the placenta देकी कोन होचे हमरो IgG ता आसी. तो एई दीटा जा कोठ आसला मदर बॉडी देहरु fetus को आसला. तो एटा जनक देहरु आ जनक आसला. तो सेही प्रकार इम्यूनिटी का हम कोन बोली कहते पैसिव इम्यूनिटी बोली कहते. नेक्स्ट आसला हमरो एंटीबॉडी दैट इज द आर्टिफिशियल लाइक टिटेनस and the antivenom when a snake will be bite to us जेतो स्नेक हमु कामुडी दिए सेही समय रे हम कोन करते एंटीवेनम दोचे. तो एई सब जाका हमर कोन होची डिफरेंट माने जनक देहरु आसी कि ता अगेंस्ट फाइट करियाटा को हम कोन बोली कहते पैसिव इम्यूनिटी बोली कहते. दिस इज ऑल अबाउट योर इम्यूनिटी. We have already discussed the innate immunity or the non-specific immunity. Now in this video lecture we have discussed about the specific immunity and the different types of specific immunity, and this video will be completed. Next classes we have continue with our vaccination and what are the classification of drug. Okay, thank you.